Hi everyone. Now in this new video we'll talk about the placement processes at IIMs and the other top business schools of India. A lot of you who will be watching this video will have the aspiration of going into a top-notch business school only for one reason, that my placement should be very awesome. Now in this video possibly I'd like to express and explain the entire process, how it takes at the IIMs and the other top institutions for a period of 2 years. कि placement process कैसे चालू होता है, companies कब आती हैं, presentations कैसे होते हैं, everything we'll discuss in detail, because this could be a good motivation for all of you to be into an environment which is highly grilling, because majority of you will not be coming from the similar background. अगर आपने कहीं से भी अंडर ग्रेजुएशन किया हुआ है कोर्स, तो ये शायद इतना ग्रिलिंग एटमोस्फेयर नहीं होगा जितना किसी IIM या किसी अदर टॉप इंस्टीट्यूशन में होगा, जहाँ पे आप इतनी भारी फीस भर के आप MBA के लिए जाएंगे एंड उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे मुझे जो बेस्ट प्रोफाइल ऑफ जॉब है विद द हाईएस्ट पैकेज या एवरेज पैकेज से ऊपर मुझे कैसे मिल सकती है. कूल. So this video is all about you, for all the possible motivation that I can give it to you. Okay. Now there's a series of processes which actually gets entailed here. It usually starts by the meeting of the senior placement committee. Senior placement committee का मतलब जो लोग ऑलरेडी अभी सेकंड ईयर में जा चुके हैं, आप अभी एज ए न्यू बॉर्न इंडक्ट हुए हैं फर्स्ट ईयर में, तो your second year senior committee will come and they will have an open brief meeting with all of you. The objective of this meeting is to scare you, to be very precise. They will scare you to the good level of extent so that you can prepare yourself so that you can live up to the mark of the institution. क्योंकि आपको ये कम से कम समझ में आए कि ये प्लेसमेंट कमिटीज कितना काम करती हैं आपके लिए, आपके बेटरमेंट के लिए. ओके. So this meeting is going to happen in the first book, where they will discuss about the 2 years of span in an MBA college will be like what is the job and responsibility of the placement committee, and how the process is going to be inducted for next 1 year for summer internship and 2 years for the final placements. Clear? The second process is the election of the junior placement committee. Talking about the junior placement committee, it means some of the students of the first year will be inducted in the same group, but they will be called as a junior place comp, and senior place comp is from the second year. Okay. Now it's again a grilling process. Not everyone is going to be entertained by them, and this is one of the first placement, the first committee which is going to be formed inside the campus, which means ऐसे बहुत सारी social committees और college committees and council बनने वाले हैं आपके first year and second year में, but जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो प्लेसमेंट कमेटी होती है, तो ये सबसे पहले बनती है. क्लियर? एंड द बेस्ट एंड द शार्पेस्ट माइंड पीपल हु कैन हैंडल द कंपनीज एंड द क्लाइंट्स वेल will only be entertained, because you are not looking for your own betterment, you are looking for the betterment of the entire batch with you. Okay. जब आपका जूनियर बैच की कमेटी बन जाती है पूरी, उसके बाद जो प्रोसेस है वो चालू होता है CV बिल्डिंग एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस. अब आप किसी भी रैंडम टेम्पलेट में अपना CV नहीं दे सकते. हर कॉलेज का एक अलग फॉर्मेट होता है, आपको उस फॉर्मेट के अंदर अपना CV बिल्ड करना पड़ेगा. उसमें हो सकता है कुछ कीवर्ड्स या कुछ आपके ऐसे प्रोजेक्ट जो आपने किए हैं लेकिन आप शो नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीजें हट जाएंगी, बिकॉज दे विल ऑल्सो हैव अ वेरिफिकेशन प्रोसेस where the junior and the senior place comp committee will eliminate all the pointers of a CV for which you do not have a justification for. Clear? And these CVs will be presented to the companies so that these companies will come on to the campus for the placement. Next element is the pre-placement talks by companies. Pre-placement talks, which means as a gesture, all the companies will come onto the campus, all the top companies will come, and they will have an open brief discussion about the profile of job or the openings what they have at the company, and how beautiful it's going to be for you if you join them. Okay, it's going to be open two-way process कि अगर आपको जो भी questions हैं आप पूछ सकते हैं. It's again one of the platform where you can come in limelight. If you can ask good questions to them, surely they will remember you, so that when you go for the interview round or the GD round, your face will be remembered by them. At the same time, once the pre-placement talks gets over, next comes the case study competitions. Lot of the companies usually will launch a case study competition. The list of case study competitions I have just uploaded previously. अगर आप जाएं और search करें MBAP channel पे, you will get the list of top business case study challenges which I usually launch on the MBA colleges, be it HUL line या Amazon Ace Challenge. बहुत सारे होंगे. इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि they want to hire the best talent beforehand. अगर आपने उन केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स में अच्छे से परफॉर्म किया, be it आदित्य बिरला, be it कोटक महिंद्रा बैंक, be it yes बैंक, HUL या Amazon, McKinsey, everyone will give you some competition. अगर आपने उस competition में अच्छा परफॉर्म किया, then already pre-selected students will be
called for the PPI, which is a pre-placement interview, or forward for the PPO, pre-placement offer. Okay, which means आपको एक additional edge मिल जाती है कि आप ग्रिलिंग प्रोसेस जो आपके सेकंड ईयर के बाद होने वाला है, आप उसमें शायद ना बैठे. Okay, next comes the knowledge sharing by seniors, where people who are the alumni of your college and working in the same company will come onto the campus, and they will discuss about the opening, how beautiful the program was for him, and they will discuss their own personal experience so that you can learn from them. Again, it's the platform where you can have a good networking with them, because these will be your point of contact inside the company. अगर आप उसी कंपनी में जाते हैं तो आप सबसे पहले किससे मिलेंगे? आप सबसे पहले मिलेंगे किससे? आप सबसे पहले मिलेंगे अपने एलुमनाई से. क्लियर? तो यही एलुमनाई आपके कॉलेज में आने वाले हैं, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते. Okay. For the processes of taking GD and PI, mock GD and PI, which is going to be taken by senior placecom and the junior placecom, बहुत सारे GD and PI होने वाले हैं ताकि you become prepared for the actual PI and the GDs. Next, possibly you will be having your own preparation. आप कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे, जो उनके फेवरेट क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स प्रिपेयर करके लिखेंगे, और बहुत सारी बार रिव्यू करेंगे अपने फैकल्टीज के साथ, अपने सीनियर मेंबर्स के साथ, एलुमनाई के साथ, एंड अपने आंसर्स को रेक्टिफाई करेंगे. ओके, दैट्स व्हाट द एंटायर प्रोसेस वुड बी. ये होने के बाद फिर आपका जो डी डे होता है, विच इज एक्चुअल प्लेसमेंट डे, वो आपका चालू होता है. जब आपका प्लेसमेंट चालू होता है, तो अगर मैं टॉप आईएम्स की बात करूँ तो यहाँ तो 2-3 दिन के अंदर ही पूरा प्लेसमेंट खत्म हो जाता है. अगर आप मिड लेवल कॉलेजेस की बात करें तो शायद एक हफ्ते के अंदर पूरे प्लेसमेंट जो है वो खत्म हो जाएंगे. 200, 250, 300, 400 बच्चे सबके सब प्लेस हो जाएंगे एक साथ. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर इज डे जीरो कॉन्सेप्ट. डे जीरो कॉन्सेप्ट इज जब प्लेसमेंट चालू होता है, द डे द प्लेसमेंट गेट स्टार्टेड इज कॉल्ड एज अ डे जीरो कॉन्सेप्ट, where most of the prominent and the eminent jobs by these companies, the most reputed and the premium jobs will be entered in onto the campus. Be it McKinsey, be it BCG, Google, Amazon, Flipkart, जितने भी hot profiles हैं इंडिया में, जो यूनिकॉर्न्स आप बोल सकते हैं इन लोगों को, ये प्रोफाइल की कंपनीज को हम पहले बुलाते हैं ताकि इनको बेस्ट टैलेंट मिल पाए. हाँ, इसमें प्रोफाइल किसका सिलेक्ट होगा? जो बच्चे ने एकेडमिक्स अपनी अच्छे से की हुई है, अपना सीवी और रेज्यूमे बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, अपने प्रोफाइल को बहुत डायनेमिकली डाइवर्स बनाया हुआ, ये लोग आपके शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे डे जीरो के लिए. ओके, ये डे जीरो का कॉन्सेप्ट भी मतलब ऐसा नहीं कि कॉलेज सिलेक्ट करेगा, द कंपनीज विल सिलेक्ट द प्रोफाइल्स. They have the liberty to choose the CV which they want to see and which they will not to see, do not want to see. So people who have performed good in the academics, extracurriculars, projects, जो कुछ भी अच्छी चीज है, वैसे लोग सबसे पहले आएंगे और वो डे जीरो में सिलेक्ट होता है. क्लियर? तो डे जीरो इज द मोस्ट प्रीमियम थिंग दैट कैन हैपन इन योर लाइफ. आप जैसे ही प्लेसमेंट चालू हुआ उसी दिन आप सिलेक्ट हो गए. सोचिए, इतनी बड़ी बात. नेक्स्ट वुड बी एक और कॉन्सेप्ट है, विच इज कॉल्ड एज बैंक डे कॉन्सेप्ट. बैंक डे कॉन्सेप्ट मतलब ये कि उस दिन सबसे ज्यादा बैंक्स आएंगे. तो मतलब सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट अगर कहीं होता है तो वो बैंक्स ही लेके जाते हैं. क्लियर? सो अगर आप 2 या 3 दिन नहीं हो पा रहे हैं प्लेस, बहुत फाइट मारा आपने, तो तीसरे चौथे दिन आप कम से कम बैंक्स में प्लेस हो ही जाएंगे. किसी किसी कॉलेज में डे 2 में बैंक्स आ जाते हैं, किसी किसी में डे 3 पे आ जाएंगे. सो बैंक्स में तो आप हो ही जाएंगे, बट आप अपना रिसर्च पहले से कीजिए कि कौन से किस्म के बैंक्स में आप जाना चाहते हैं. यू वांट टू गो टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और रिस्क मैनेजमेंट. तो अगर आपने प्रोफाइल या इक्विटी रिसर्च या प्राइवेट इक्विटी, अगर आपने अपना रिसर्च और थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है कि मैं इसी प्रोफाइल की जॉब देख रहा हूँ, तो यू कैन शॉर्टलिस्ट द बैंक्स एंड द प्रोफाइल ऑफ जॉब्स, ताकि आप मिसमैच ना कर बैठे. क्लियर? सो दैट्स हाउ ब्यूटीफुल योर लाइफ इज गोइंग टू बी फॉर द नेक्स्ट 2 years, प्रोवाइडेड यू राइट द कैट एग्जामिनेशन. क्लियर? अगर आपको इतने ग्रिलिंग और इतने एम्बिशियस इन्वॉल्वमेंट के बीच में जीना है अगले 2 साल, my humble request is to you to crack CAT very awesomely, so that you get the top IIMs or the other business school calls, and the further it's going to be in autopilot mode, which you will see everyone is into the same process, and the best thing will happen to all the students studying inside. Okay, so thank you so very much for watching this video. If you like this video, please share and subscribe so that we can help you out with the further guidance too.